इसका हेल्प लेता हूँ लाइक द फर्स्ट इंडिकेटर दैट आई यूज इज रेजिस्टेंस देन आई एक्चुअली वेंट अहेड एंड मैंने से टाइम फ्रेम छोटा कर दिया राइट नाउ आई हैव द सपोर्ट आई हैव द रेजिस्टेंस तो मैं कुछ इंडिकेटर्स का हेल्प लेता हूँ लाइक द फर्स्ट इंडिकेटर दैट आई यूज इज CCI is the commodity channel index. What is CCI? Just give me it. So Google Pay, the description is it's a technical indicator that measures the difference between the price, current price and the historical average price. तो historical जो भी average price है उसके हिसाब से वो एक weightage निकालता है like and then it actually uh, draws a line as similar to what you see in the RSI indicator, right? So this is like a weightage commodity अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा वो इस तरह से डिफाइन करता है. It actually plots a line. Now मेरी settings है I remove the middleman. मैं ये लेंथ को 34 कर दूंगा, राइट? सो लास्ट 34 डेज का वो लास्ट एक मंथ का वो एवरेज निकालेगा एंड एक्चुअली इट विल प्लॉट अकॉर्डिंगली. तो वो लाइन थोड़ा इट विल चेंज, राइट? सो लास्ट 1 मंथ का एवरेज से मैंने दिस इज द CCI, this is the CCI setting that I use while trading in commodities, right? The next indicator that I use is definitely RSI. Guys, pay attention to how I am setting up, right? क्योंकि commodities में basically RSI is one of the major factors on how you trade. Like मेरा जो setup है उसमें RSI में बहुत अच्छे से वर्क करता है. आई ट्राई टू लाइक RSI बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड आई ट्राई टू यूज द RSI फॉर ऑल माय ट्रेड्स, राइट? सो एवरीथिंग विल बी डिफॉल्ट. नंबर्स में कुछ चेंज नहीं होगा, खाली रेगुलर बुलिश ये लेबल्स में निकाल दूंगा. आई रिमूव द मूविंग एवरेज एज वेल. ठीक, दिस इज द RSI and this is the middle line which is 50. So 70 is my oversold position, 30 is the uh, sorry, uh, 30 below 30 is the overbought. Sorry, उल्टा बोल गया मैं. Right? So 70 and 30 is the overbought and oversold, and uh, 50 is the 50 is the middle band, right? So this is how you like I use default settings for RSI and commodity में normally it is fine. आपको वो 60-40 जो आप stocks में follow करते हैं that concept will not much that perfectly in commodities. तो मैं I use 70 and 30 as an option. Can you please show the RSI setting? So RSI is again not the default one. मैंने डिफॉल्ट में RSI में I have used 70 and 30 only. The middle band is 50, which is again what is the like default one. I am not changing. मैंने खाली ये labels निकाला like RSI base MA निकाला और ये labels निकाला so that वो जो यहाँ पर बीच में कोई इंडिकेटर या डॉट ये सब आते हैं वो I don't want that at least in my trading, right?
See guys, if you now if you look at this chart, अभी आप सिर्फ देखो इसको, do you figure out anything based on uh, these ये price action and the CCI and the RSI? Do you find anything like आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है just by looking at this? No, I'm not talking about what candlestick and all. As a chart on an whole, अभी जो screen पे पूरा chart दिख रहा है, उसको देख के what actually you're able to determine. मैं just वही पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं pattern नहीं. So I'll clear that. So CCI में diversion नहीं होता है. CCI is uh, not a diversion. CCI is actually weightage and RSI is basically that relates to like price action की overbought है, oversold है. Basis that RSI you determine. Uh, if you see, if you see, market यहाँ से गिर रहा है. ये एक्चुअली वेटेज बताता है. जब भी मार्केट हाँ लाइक 100, ये द वैल्यूज फॉर RSI इज 100 एंड -100, राइट. तो जब भी 100 से रहता है, तो जब प्राइस नीचे आता है, वो धीरे धीरे करके -100 भी आता है, राइट. और मैनी अ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो जब -100 से ऊपर चढ़ता है, तो वो धीरे धीरे करके 100 पे जाता है. हाँ, उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट देन सपोज मैंने यहाँ पर बाय किया होता बेसिस ऑन दिस, राइट. इस कैंडल पे मैंने बाय किया होता, तो वो 100 कहाँ पर गया, यहाँ पर पहुंचा, राइट. तो -100 से 100 यहाँ पर आया, राइट. सो व्हाट इज द प्राइस ओवर हियर, 1947 एंड 6013. हाउ मेनी पॉइंट्स डिड आई गेट? कभी उसके नीचे आया प्राइस के पास, वो आया प्राइस के पास आया, लेकिन वो बेसिकली कर करके ऊपर ही गया, राइट. इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, बट आई एम जस्ट शोइंग कि एक्चुअली सीसीआई कैसे वर्क करता है. तो आप जब भी देखोगे ऑन एनी टाइम फ्रेम, लाइक इवन इन आर्ली टाइम फ्रेम, ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम, आप जब भी देखोगे सीसीआई अगर से नीचे आने चालू करेगा, तो वो थोड़ा फॉर नाउ. सो विल प्लॉट two indicators over here more. Now what I'll plot is moving average, simple moving average, and the other I'll plot is the EMA. For SMA, I'll remove the smoothing line. The length of the EMA would be sorry, simple moving average would be 200. I'll remove each. कल कोई पूछ रहा था, right, was what's that cross line, तो मैं line की जगह पे I use the cross. तो बेसिकली वो जल्दी से समझ में आ जाता है मुझे कि दैट इज, इवन इफ आई डू नॉट चेंज द कलर्स एंड ऑल, वो मुझे समझ में आ जाता है कि दिस इज माय SMA लाइन. तो दिस इज SMA 200 एंड EMA का है, व्हाट आई प्लॉट इज EMA 50, राइट. व्हाट इट गाइस. तो वो
जब भी प्राइस ऊपर से SMA 200 को कट करती है, जब जब भी प्राइस SMA 200 को कट करती है, तो वी एक्चुअली विल वेट, वी डू नॉट एक्चुअली गो डायरेक्टली, और हम लोग सेल या पी बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं। वेन एवर जब भी प्राइस ऊपर से कनेक्ट कट करती है, तो यू विल हैव टू वेट। सी लाइक गाइस, कमोडिटीज में यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, कि प्राइस एक बार आता है तो ऊपर आता ही है, और फिर नीचे जाएगा तो फिर वो एक यूनिडायरेक्शनल जाता है। सो वेन एवर if the EMA line is below the SMA line, तो what the prices will do is, वो है ना, EMA लाइन पे सपोर्ट। बेसिकली द थिंग इज दैट कि बहुत सारे concepts है available in the market, but most of the traders that they use the SMA and the EMA to while trading in commodities। तो आप देखोगे ना, अगर यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, देख, इसने SMA को काटा, ऊपर से नीचे प्राइस आया, and then it again went up, but again it came down, and फिर उसने EMA को भी तोड़ा। सो यहाँ पर जब तोड़ा तो उसने EMA पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, EMA 50 पर जब वो EMA 50 तोड़ करके भी नीचे आया, देन एक्चुअली यू गॉट फ्रॉम 60338 से, यहाँ से लेके यू गॉट अराउंड 60-70 पॉइंट्स, राइट, कमोडिटीज में, इन क्रूड। लेकिन उसका भी कंडीशन है, वेन एवर यू टेक अ ट्रेड, जब भी SMA का सपोर्ट लेके वो तोड़ के नीचे आता है, दिस वो यू शुड सी कि वो CCI भी वो नीचे की तरफ आ रहा हो, लाइक इट शुड बी लेस लेस देन 100। अगर यहाँ ऊपर रहेगा, सपोज आप देखोगे, लेकिन स्टिल द प्राइसेस विल बी, कोशिश किया, मतलब जब भी सेल 60-70 पॉइंट्स, राइट, और जब वो, तो अगर मैं बाय यहाँ नहीं करता तो आई कैन कुड हैव बॉट ओवर हियर, आई कुड हैव बॉट ओवर हियर, यू विल सी क्या किया RSI ने, यहाँ पर आया, उसने ट्राई किया 50 के आसपास आकर, उसने सपोर्ट लेके फिर वो वापस ऊपर की तरफ गया। एंड नॉर्मली कमोडिटीज में आप देखोगे मूव्स आर यूनिडायरेक्शनल, आपको खाली थोड़ा पेशेंस रखना है, और आपको टाइमली एंट्री करना है, राइट। सो दिस इज द करंट स्टेटस, राइट। अभी आप देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, द CCI इज गोइंग अप। तो मैंने बोला जब यहाँ पर कि आप ले लो जाकर, अ, मतलब नॉर्मली यहाँ से वो 100 पे जाएगा ही जाएगा। इट डज नॉट मीन कि आप यहाँ पर डायरेक्टली टर्न हुआ तो आप डायरेक्टली बाय कर लोगे, नहीं। जब ये यहाँ पर जाएगा तो यू हैव टू वेट कि वो EMA पे क्या कर रहा है। अगर EMA और SMA में डिफरेंस है, तो अगर EMA क्रॉस करके जा रहा है, एंड इफ इट्स ऑल्सो क्रॉसिंग EMA 50, सॉरी RSI 50, तो ये यहाँ पे जाके वो एक बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। तो व्हेन उसने EMA 50 तोड़ करके ऊपर ऊपर सस्टेन करने चालू किया, तो देन विल एक्चुअली ट्राई कि RSI 50 के ऊपर जा रहा है, एंड द CCI इज ऑल्सो शोइंग अस इन एन अपसाइड डायरेक्शन, तो मैं जाके यहाँ पे बाय कर दूंगा, एंड आई कुड वेट फॉर 6020 तक का, 6,000 का, आ, मतलब टारगेट रख के मैं होल्ड करके ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, इसने क्या किया है, अभी EMA 50 पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है, राइट। EMA 50 पर रेजिस्टेंस ले रहा है। नाउ इट्स, इफ यू सी टुडे इट्स इन अ रेंज, मार्केट आज एक्सपायरी है तो थोड़ा रेंज है और वोलेटाइल भी है, बट इट्स टेकिंग अ रेजिस्टेंस एंड EMA 50। यहाँ पर आकर वो 50 के ऊपर गया है, RSI 50 के ऊपर गया, देन इट हैज कम डाउन, तो वो इट इज शोइंग कि शायद वो नीचे आ सकता है, एंड देन द CCI इज ऑल्सो गोइंग डाउन, राइट।
तो अगर वो थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है एंड द आरएसआई नीचे जा करके वापस आ करके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे जाने की कोशिश करता है, देन वी वी विल अज्यूम दैट कि वो ईएमए पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया उसके पास भी है, and then we can actually initiate a trade near somewhere near this zone, somewhere near this zone, and then we can wait for the crude to come down, and our target would be जब तक वो RSI 30 पे नहीं आ जाता, 30 के आसपास नहीं आ जाता, या ये लाइन पर नहीं आ जाता, we can accordingly, as per our risk appetite, we can try to take a target like 20, 30, 40, 50 points. Generally 30, 40 points हमको crude में बहुत easily मिल जाते हैं. That would be like around 15 to 20 points in options as well, right? You said that today's market expiry, Daniel Philip. For futures, it is not an expiry, but for options in crude, 19 Jan is the expiry. Today is 17th, right? So when I showed you the PDF, what it said, 2 days prior to the expiry day of the underlying futures contract. So the actual expiry would be 19th Jan. But then if you, it depends on the broker, because if even if you see that angel में आप देखोगे तो angel will actually show you कि आज expiry है, because आज आज और कल वो आपको इस मंथ के ऑप्शंस में ट्रेड करने नहीं देगा. So basis that, normally brokers will show you 17 Jan as the expiry, because वो 17th 18th आपको ट्रेड नहीं करने देगा, and 19 it will automatically expire, right? uh, Daniel, I hope I cleared your doubt. This is how actually I take the trade. यहाँ पर भी आप देखो, जब मार्केट यहाँ पर से ऊपर जा रहा है, it actually took a resistance at SMA 200, right? SMA 200 के बाद उसने रेजिस्टेंस लेके EMA को भी ब्रेक किया. The CCI is on the downside में the SMA 200 line, uh, but then the difference becomes quite 30. So at this point, I will not taken a trade at 6041 near 7. So it's taking support near EMA. तो EMA के पास में SMA. See, the CCI should be in a falling channel, trying to do near the RSI. फिर वो RSI पे अगर वो 50 के नीचे जा रहा है, and if it's trying to take a support near 50, below 50, 50 के माइन उस 50 के नीचे, if I have to sell, वो 50 के नीचे होना चाहिए, and if it's actually facing a resistance at RSI 50, then I'll, एक बार मिस हो जाएगा तो दूसरी बार तो आइडली मैं ट्रेड ले लूंगा, राइट? यहाँ पर देन दी EMA came down. अगर if the EMA has come down below the SMA line, then my uh, stop loss will become the EMA 50 line, and you see कि even if you see today, वो EMA 50 पे ही डायरेक्टली रेजिस्टेंस ले लेके बार बार नीचे आ रहा है, राइट? सो दिस इज अ 15 मिनट चार्ट. मैं यहाँ पर बेचूंगा 236. हैड आई बॉट हियर, यहाँ पर जब वो अप ट्रेंड में जा रहा है, सो दैट कंडीशन डज नॉट फुलफिल, राइट? बिकॉज वो एसएमई के ऊपर नहीं है. सो यहाँ पर मैं आके सेल करूंगा 235.
8.8 अगर मैं फ्यूचर एक लॉट सेल किया 235 पे बिकॉज इट्स टेकिंग अ रेजिस्टेंस ओवर हियर राइट दी व्हाट इज इट डूइंग दी CCI is in the following falling channel राइट उसने वापस यहाँ पर आया और वापस से 50 पे रेजिस्टेंस लिया राइट तो जब 50 पे रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर on this candle I would have easily would have sold one lot natural gas if you are doing it क्या किया यहाँ पर the CCI is in the falling tries to take resistance and comes down will ideally go and sell and आज ज़्यादा movement है नहीं it's actually showing sideways so what will happen we'll try to take 1 or 2 rupees and actually trail अगर 1 रुपया भी मिल गया it is 1250 rupees now I'll add one more indicator to this setup right I'll add one more indicator to this setup is just type ADX right ADX is everything is default in this indicator what I'll do is I'll just draw a line over here I'll just plot this line at 23 ठीक है I'll plot this line at 23 now what this does this do right are these indicators available in Zerodha it should be because क्या use किया है हमने CCI is available RSI CCI is commodity channel index अगर that is available RSI is also available ADX should be available and SMA and EMA I guess is our default तो available होना ही चाहिए right so ये जितने भी indicators मैं बता रहा हूँ it should be available in with all the brokers right now whenever I want to initiate a trade see what does ADX mean ADX is average directional index right तो आप उसका गूगल भी करोगे ना तो 25 20 to 25 is actually ADX plus DI that is tremendous move in the market right so if you see like मैंने यहाँ पर एक line plot किया है right टी तक ADX ये जो मैंने conditions जो पहले के even if I take a buy trade ADX needs to be about 23 जैसे मैंने यहाँ पे बताया that means जो भी market करने वाला है there would be strength in it right whenever you see the ADX is less than 23 the market will try to be sideways even if you see Nifty मेरे ख्याल से निफ्टी में भी काम करना चाहिए let's see right I'll plot a line तो यहाँ पर देखो जब भी इतनी दूर में मार्केट वाज ट्राइंग टू बी ADX की था तो मार्केट वाज मोर और लेस साइडवेज ही ऑन अब साइडवेज में वो जा भी सकता है ऊपर बट देन द स्पीड ऑफ राइजिंग और द फॉलिंग वुड बी वेरी स्लो अब यहाँ पर क्या हुआ इट केम हियर और फिर यहाँ पर ADX बढ़ गया सो सपोज यहाँ पर ADX बढ़ गया तो सी द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट वो फॉल कर रहे तो इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग राइट अब कभी भी देख लो ऐसा हिस्टोरिकली आई ट्राई टू सी इवन इन निफ्टी तो इट इज फॉलिंग ओवर हियर इट इज ट्राइंग टू बी साइडवेज और थोड़ा ऊपर गया तो देयर वाज द फॉल वाज देयर लाइक फ्रॉम 80 580 टू 489 अराउंड 60 70 पॉइंट्स और यहाँ पर क्या किया उसने
738 से लेके, so the fall was there but it was slow, very slow, right? So this I have added to my condition. जब भी मैं ट्रेड करूंगा, I I'll do only when the ADX is trading above 23. I generally try to be time frame के बारे में जसप्रीत, I generally try to be uh, take trade in 15 minutes only, but then it's up to you. You can just a minute. You can actually plot multiple time frames on your screen, and you can plot multiple time screen. जैसे मैंने अभी यहाँ पर 15 minutes plot करके रखा है. This is for 15 minutes. Okay, if I plot, I also have plotted uh, for 5 minutes as well. तो एक ही स्क्रीन पे मेरा 5 मिनट्स भी चल रहा है, एंड देन नेचुरल गैस का, और एक ही टाइम फ्रेम में मैं 15 मिनट्स भी देख रहा हूँ, बट यू कैन डिपेंड्स. मैं नॉर्मली ट्रेड 15 मिनट्स पे ही लेता हूँ. 5 मिनट्स में सिस्टम कर क्या रहा है वो देखने की कोशिश करता हूँ, बट ट्रेड विल ऑलवेज बी इन 15 मिनट्स. The time frame will only always be 15 minutes. Just give me a minute, guys. So this is how actually I try to take my trade. So this was for natural gas and crude. So I don't think हमको uh, we would require that much days to complete, because uh, setup to crude and crude, silver, gold. Gold is slightly different. Crude or sorry, silver and gold is slightly different. थोड़ा सा difference I have kept in my setup when I trade in bullion. Uh, but not much difference in it. So this is overall my setup. और एक setup use करता है. I'll try to show it tomorrow. Uh, when I trade, I'll will we be having live trading classes? Any paper trade in this? So you can try. Like मैंने तो आपको conditions बता दिया, right? So like in this again, uh, the RSI is going up. The It's trying to take a support near 50, but then the uh, ADX is below 23, so I'll not take a trade. I'll wait. अभी कोई trade दिख नहीं रहा है मुझको. If at all I see a trade, we surely can do a paper trade or something like that. See, like if the crude is now in 15 minutes time frame, it has crossed EMA, right? What is it doing in the 15 minutes time frame? ADX was upside, but जब वो नीचे गिरा था, but it's now the strength is losing. तो शायद ये अब sideways होगा because of the expiry and all. We'll wait. Like अभी इसमें भी कोई सेटअप कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन इफ यू वांट टू कैप्चर, लाइक अगर आपको ये मूव कैप्चर भी करना होता तो यू कुड हैव सीन. देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया थी, सीसीआई वेंट अपसाइड, उसने ईएमए को तोड़ा, ईएमए को तोड़ा, एंड व्हाट हैज इट डन, वो थोड़ा ऊपर गया था आरएसआई पे आके, उसने 50 पर सपोर्ट लेके इट हैज एक्चुअली वेंट टू 70 डायरेक्टली. तो एक कैंडल स्टिक में फ्रॉम 5938 टू एक्चुअली 71, 30-40 पॉइंट्स उसने एक ही कैंडल स्टिक में दे दिया. बट हाउएवर आई विल नॉट ट्रेड, बिकॉज मेरा कंडीशन ये है, uh, ये कंडीशन फॉर द एडीएक्स डज नॉट मीट अप. तो
if we have fund for equity and derivatives, can that be used for commodity, or we have to have, so like depends. Angel one, for Angel one, that broker, you can actually use the same fund for doing equity as well as commodity. But then, just a minute, just give me a minute. Oops, sorry. So when you want to add funds, तो आपको commodities, like in upstocks, you'll have to go to the commodities section, and then you'll have to add funds for commodities, right? And accordingly, so for all of the brokers, I guess there are different funds required, except for uh, Ganapati. Hope I answered your query. Fine. कल चाहिए तो हम we'll try to do some sort of, we had demanded 5 to 6 class, तो वो सेटअप मैं कल बता दूंगा. सो आई गेस मेरे ख्याल से मेरे पास और अ, 3-4 सेशंस है वी की लिक्विडिटी. सो अगेन, गुड क्वेश्चन actually. uh, we'll see the option chain. The current price is 735, near 7235, right? So crude or every commodity, you'll see that the round figure number will have, अगर आप ATM ITM लोगे, and if the crude, in case of crude move 30-40 points, तो वो ITM में it would be around 10 to 15 points का move होगा. But then वही है, the current natural gas price is 234.8. So if I want to buy a ITM C near with the nearest zero, if I try to buy one lot, it is 15 to 16,000. But yes, you can definitely apply strategies, but ADX strategy. Which one? This is ADX, RSI, CCI, EMA. That is that is another indicator, but then that I don't use for commodities. वो मैं equity trading के लिए लेता हूँ. So that's the reason I did not show you, right? So it is TSI, true strength index. Okay, please tell us the setup for CCI. CCI का मैंने बता दिया, right? So everything is uh, by default. Only the thing is that the length जो मैंने है वो by default 20-25 रहता है. I change it to 34. I try to take a monthly average for the past 34 sessions. So the only thing that I change is 34.
Sasadhar, am I fine? Am I clear? Sasadhar Bera, right? Zero Dhame, you can type uh, commodity channel index. You type, as I said, you type commodity channel index. I guess so.